हेलो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डेप्रिसिएशन टॉपिक के ट्रू और फॉल्स। ओके, सो फटाफट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ट्रू और फॉल्स, इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ अ फिक्स एसेट इज वन ऑफ द रीजंस फॉर डेप्रिसिएशन बीइंग चार्ज। तो ये क्या है? फॉल्स। सो इट इज द डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू एज वन ऑफ द reasons for depreciation and increase in market value may result in revaluation. So ये आपने लिखा तो भी चलेगा. One more sentence for reason. Second, depreciation of an asset begins when it is available for use in the location and condition necessary for it to be capable of being operated. So this is true. It is not necessary that asset must be used to be depreciated. Thus depreciation may start once it is brought in the location and condition required to be used. So actual use is not necessary. Second is true. Third, cost of property plant equipment includes purchase price, refundable taxes and import duties after deducting any discount or rebate. So this sentence is false. Cost में क्या क्या आता है? It includes purchase price and it includes non-refundable taxes and import duties after deducting any discount or rebate. Okay, so third का आंसर है false. Non-refundable taxes and duties form part of the cost. Fourth, cost of fixed asset should also include cost of opening a new facility such as inauguration cost. So inauguration functions होते हैं, सो उस फंक्शन के लिए जो कॉस्ट लगती है वो फिक्स एसेट के कॉस्ट में ऐड करनी है क्या? नहीं. सो फोर्थ इज फॉल्स. इनॉग्रेशन कॉस्ट शुडंट बी पार्ट ऑफ कॉस्ट. फिफ्थ, depreciation is charged with a constant amount under straight line method and charged with a constant percentage under diminishing balance method. So this is true. Fifth is true. SLM method results in same amount and diminishing method involves same rate of depreciation. So मैंने बताया था आपको कि अगर सेंटेंस ट्रू है तो आपको वही सेंटेंस लिखना पड़ता है, बट थोड़े से अलग वर्ड्स यूज करके वही सेंटेंस लिखो. नेक्स्ट, 6, in case an item of property plant and equipment is revalued, whole class of assets to which that asset being revalued belongs should be revalued. So this is true. Sixth is true. Revaluation should be done for the whole class of the asset and not for a particular asset. मतलब क्या? फर्नीचर इज अ क्लास ऑफ एसेट. फर्नीचर में क्या क्या आ सकता है? चेयर्स, टेबल, कबर्ड. ओके, तो ये पर्टिकुलर एसेट के लिए रिवैल्यूएशन नहीं करना है, पूरा क्लास जो है फर्नीचर को रिवैल्यूएशन करना है. नेक्स्ट, 7, in case the carrying amount of an asset is decreased due to revaluation, such decrease should always be recognized in profit and loss account. The answer is false. So initially it is recognized in P&L, but if it is subsequent decrease due to revaluation, first it is debited to revaluation reserve and then remaining to profit and loss account. So false. 7 का आंसर है false. Any decrease in the value of asset on account of revaluation should be first debited to revaluation reserve if any and then to profit and loss account. Next, 8, true or false. Akash purchased a machine for 12 lakh. Estimated useful life is 10 years and scrap value is 1 lakh. Depreciation for the first year using sum of the years digit method shall be 2 lakh. Okay, so this answer is true. So sum of years digit method में कैसे कैलकुलेशन होता है? देखो, कॉस्ट 12 लाख है, माइनस 1 लाख स्क्रैप वैल्यू करो तो 11 लाख. दिस इज द डेप्रिसिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय 55 इंटू 10. सो डिवाइडेड बाय 55. 55 कैसे आया? सम ऑफ ईयर्स डिजिट. सो कितने ईयर्स है? 10. सो 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1. ओके, इसकी टोटल 55 होती है, वो आता है डिनोमिनेटर में एंड न्यूमरेटर में आता है 10, जो फर्स्ट ईयर के लिए 10, सेकेंड ईयर के लिए 9 आएगा. सो ऐसे कैलकुलेशन आपने किया तो यू विल गेट 2 lakh. सो दिस इज ट्रू.
उसके बाद 9th क्वेश्चन, डिप्लीशन इज द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट सच एज पेटेंट्स एंड कॉपीराइट. सो 9th इज false. Depletion relates to allocation of cost of natural resources. So आपके आंसर में कौन से वर्ड्स आने चाहिए? Cost of natural resources. Allocation of cost of natural resources. Then next, providing for depreciation also helps in providing for accumulation of funds to facilitate the replacement at the end of its useful life. So this is true. So 10th is true. Reason देखो, depreciation being non-cash expense reduce the distributable profits and hence facilitates the replacement of asset when required. So depreciation is non-cash expenditure. So हम उसको P&L को डेबिट तो करते हैं, करें, बट वो non-cash expenditure है. So जो actual profit आया है as per P&L, वो profit and जो cash profit होगा, मतलब जो कैश में एक्चुअल आपने कैश काउंट की तो कैश प्रॉफिट ज्यादा होगा. ओके, सो उससे क्या होगा, P&L को जो आपने डेबिट किया है वो बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, वो कम होगा. उससे जो कैश बचेगी, जितना डेप्रीसिएशन आपने P&L को डेबिट किया है उतनी कैश तो बच जाएगी, करेक्ट, क्योंकि उतनी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में आई ही नहीं है. तो दैट अमाउंट यू कैन यूज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट. नेक्स्ट, if the equipment account has a balance of rupees 12,50,000 and the accumulated depreciation account has a balance of 4 lakh, the written down value of the same shall be rupees 16,50,000. So this is false. Cost minus accumulated depreciation करना है. So 12,50,000 minus 4 lakh, 8,50,000. Next 12, sum of years digit method is an example of accelerated method of charging depreciation. So this is true. Higher depreciation charge is in earlier years under the sum of years digit method. So accelerated method मतलब क्या, पहले ज़्यादा depreciation and बाद में कम depreciation हो जाता है. 13, over the life of an asset subject to depreciation, the accelerated method will result in less depreciation expense in earlier years and more depreciation in later years of its life. So this is false. So इसमें क्या होता है, it is vice versa. As under diminishing balance method, higher depreciation is charged in the beginning and lower depreciation is charged in the later years. Next, 14, while depreciating land cost, straight line method shall give more depreciation than the written down value. So इसका आंसर false है, land cannot be depreciated. 15, provision for depreciation account is debited at the time of recording the depreciation on an asset. So this is false. Provision for depreciation account is credited while charging the depreciation. So हम entry क्या करते हैं, depreciation account debit to provision for depreciation account. Next 16, if adequate maintenance expenditure is incurred with relation to running repairs of an asset, we need not charge any depreciation. Okay, the sentence is false. Depreciation is the allocation of cost of an asset over the useful life. Regular repairs may be required during its lifetime. So depreciation has to be charged anyways. 17, when a property, plant and equipment मतलब asset is sold, then provision for depreciation account is debited, asset account is credited and any gain or loss is recorded to profit and loss account. So this sentence is true. Okay, हम entry क्या करते हैं, at the time of sale of an asset, respective asset account is credited with provision for depreciation account being debited and any resulting gain or loss being charged to profit and loss account. Okay, so at the time of sale आप क्या एंट्री करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट भी डेबिट, अगर लॉस है तो P&L अकाउंट डेबिट टू एसेट एंड प्रॉफिट है तो टू P&L. ओके, यस. नेक्स्ट 18, while calculating the depreciation,
as per diminishing balance method, the salvage value of the asset at the end of its life is reduced from its cost. So this is false. Under diminishing balance method, salvage value is not considered initially, as it assumes that at the end of the asset's life, the remaining value shall be its salvage value. So directly जो original cost होती है उस पे ही आपको depreciation का rate लगाना है. 19. Any change in the estimated useful life of an asset should be accounted for as a change in accounting estimate in accordance with accounting standards. So this is true, क्योंकि जो estimated useful life, so estimate ही कर रहे हैं ना, तो हम क्या treat करेंगे उसको, change in accounting estimate. 20. Whenever any depreciable asset is sold during the year, depreciation is charged on it for that entire year. So false. So जितने पीरियड के लिए वो एसेट था उतने पीरियड का ही हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. सो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन इट फॉर द पीरियड इट हैज बीन यूज्ड इन द सेम ईयर. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप ये ट्रू और फॉल्स की सीरीज आपको हेल्पफुल हो रही है. सो शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स ऑल्सो. थैंक यू.